फ्रीलांसिंग। हमने फ्रीलांसिंग के बारे में काफी सुना है दैट वी कैन अर्न बाय डूइंग फ्रीलांसिंग, बट द प्रॉब्लम इज कि जब हम फ्रीलांसिंग के बारे में सोचते हैं देन देयर आर सम क्वेश्चंस इन आवर माइंड, हाउ टू गेट ऑर्डर्स, हाउ टू गेट क्लाइंट्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हम कैसे फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि एज अ बिगिनर हमें किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। सो आई विल डिवाइड दिस वीडियो इनटू फ्यू पार्ट्स। अब मोस्टली क्या होता है कि जब हम फ्रीलांसिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे जहन में यही आता है कि वी विल स्टार्ट फ्रीलांसिंग, वी विल मेक आवर अकाउंट एंड वी विल स्टार्ट अर्निंग इन डॉलर्स। बट ऐसा नहीं होता। इसीलिए आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो कि आपको किन चीज़ों पर फोकस करना है टू गेट योर ऑर्डर और टू स्टार्ट योर फ्रीलांसिंग जर्नी एज अ बिगिनर। सबसे पहला स्टेप इज टू लर्न अ स्किल। आपको स्किल्स सीखने पर अराउंड 2 से 3 महीने लगाने हैं। योर स्किल कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी ग्राफिक डिजाइनिंग, इट कुड बी वीडियो एडिटिंग, कंटेंट क्रिएटिंग और एनीथिंग यू वांट टू लर्न। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये स्किल्स सीखी कैसे जाएं। सो वी कैन लर्न दिस स्किल्स by going to any institute if you want. Otherwise, we have YouTube, जहाँ से हम किसी भी किस्म की स्किल्स को फ्री में सीख सकते हैं। But the problem is कि हमें 1-2 वीडियोस नहीं देखनी है। We must have to watch at least 50 to 60 videos on YouTube about one skill if you really want to learn that skill. And with YouTube, there are many other websites from where you can learn these skills for free, like Udemy, Alisons.com, and DigiSkills, and there are many others. And you have to spend at least 3 months on learning a skill. अब ज़्यादा मोस्टली क्या होता है कि हम स्किल सीखने के बजाय बस उसके बारे में कोई 2-3 वीडियोस देखते हैं एंड वी जंप टू आवर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। बट ऐसा नहीं करना। फर्स्ट वी हैव टू स्पेंड 3 months on learning skills. The next step is creating your portfolio. इस स्टेप में हमें अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स पर काम करना है। Now what are personal projects? So personal projects ऐसे प्रोजेक्ट्स कहते हैं जो हम खुद के लिए करते हैं, लाइक वी डोंट हैव एनी क्लाइंट्स और एनीवन एल्स के जिसके लिए हम डिज़ाइन बना सकें। देन वी डिज़ाइन फॉर आवर सेल्फ, फॉर प्रैक्टिस ऑन आवर स्किल्स, एंड यू हैव टू स्पेंड 2 months ऑन बिल्डिंग ऑन क्रिएटिंग योर पोर्टफोलियो। इस दौरान हमें दूसरे क्रिएटर्स का एंड दूसरे डिज़ाइनर्स का काम देखना है एंड वी ट्राई टू गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम देम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर देना बिकॉज लाइक्स आर फ्री। Now the third step is to share your work. इस स्टेप में हमें अपने पोर्टफोलियो को सोशल मीडिया पर शेयर करना है। You can share your work और पोर्टफोलियो on Facebook, Instagram और even on TikTok. इस दौरान you have to market yourself. For example, हमने अपना काम या पोर्टफोलियो किसी Facebook ग्रुप में पोस्ट किया, then we will get negative और positive feedback from where we have to learn the things. We have to improve our skills. Now the last step is to learn about freelancing and freelancing platforms like fiverr, Upwork and others. इसके दौरान हमें freelancing platforms के बारे में सीखना है। अब हम ये freelancing और freelancing platforms के बारे में कहाँ से सीखें? So again you can learn this from YouTube. Like you can search about fiverr courses, Upwork courses and about other sites. There are many courses free available on many websites on Google. But I personally prefer 3 courses of them for you to learn freelancing. These courses are Become a Freelancer by Udemy, Money as a Freelancer by Coursera, and the third one is Freelancing Foundation by LinkedIn. I know that these things seem simple, but it is not. It will take a lot of your time in learning or in the process. But once हमने अपना ये process complete कर लिया, then we can start our journey as a freelancer. And yeah, if you want to stay connected with me, do follow me on my Instagram. I hope you like this video. Please subscribe to my channel and hit that bell icon so you never miss any upcoming videos, because the upcoming videos are totally going to be about freelancing, Fiverr and other things like this. So good luck for your freelancing journey.